Om Shanti. Brother Om David, Shanti. You are most welcome. This is, Thank you very much. और सविता बहन का भी बहुत बहुत स्वागत है डेविड भाई. This Thank is you, Om Shanti. welcome. This is Om Vadodara Shanti. Karelibaug family, and we all are welcoming you, both of you. आपका बहुत बहुत स्वागत भाई और बहनों. डेविड भाई का नाम तो मैं समझता हूँ आप सभी जानते ही होंगे. ज्ञान सरोवर जो आर्ट गैलरी है वो सारा आर्ट विभाग की सेवाएं और जो डिजाइन्स वगैरह बाबा की तैयार होती है इसमें बहुत बड़ा पार्ट हमारे डेविड भाई का है. सो ब्रदर डेविड, टुडे सविता बेन इज गोइंग टू ट्रांसलेट योर क्लास. So of course Okay. you may deliver this your speech in English and Savitha Ben will translate it. Okay? Okay, great. Okay. So Can you Savitha hear Ben. that volume is okay for Yes, you? yes, Yeah. yeah, Yeah. absolutely, it's fine. Okay, Yeah. great. Great. Okay. Wonderful. So Om Shanti and welcome everyone. So this is a nice opportunity to share some experiences and my time here in Madhuban and being around the daddies for many years here. आप I सभी think को भी स्वागत है. आप सबके साथ अनुभव शेयर करना अच्छा लग रहा है. दादियों के साथ का और भी पूरे जगह जो सेवाएं करते हैं उसका अनुभव मैं शेयर करूंगा. So I came to Madhuban the first time in 1986. I took this Gyan in 84. इनको And 84 में ज्ञान मिला और 86 में फर्स्ट टाइम मधुबन आए. so my first time was meeting Baba in Om Shanti Bhavan in 86. And I think it was just finished, I think, a couple of years before that, the Om Shanti Bhavan. ओके, construction. हाँ, या ये 86 में ये बाबा से ओम शांति भवन में अवेक बाप दादा से मिले और जस्ट 83 में ही ओम शांति भवन से अवेक बाप दादा का पार्ट शुरू हुआ था. लाइक 2-3 साल के बाद जस्ट 83. मिले बाबा. So coming to Madhuban that time, it was of course very small. I think there was only a couple of buses and a couple of cars in Yeah. those days. उन दिनों में बहुत ही मुश्किल था. मधुबन पहुंचना भी बहुत ही कम कार थे बाबा के बसेस भी बहुत कम थे. And I remember when I first come actually, because when I first had experience of Baba in Australia, I had experience of Shiv Baba and Brahma Baba in the forest, and that forest area in Australia is very similar to the rock formation and the whole Mount Abu type of land. ओके, इनको एक्चुअली ज्ञान में आने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया देश में ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ था. ये जो माउंट आबू में पहाड़ियां है ना, ऐसे ही सिमिलर वहां पर भी रॉक जो पत्थर के पहाड़ी वहां पर भी है ऑस्ट्रेलिया में. So I was feeling that this is when I had experience of Baba in Australia, this was like the same. Like when I got to Madhuban, the whole area was like similar. So I felt there was a very strong connection between here, Madhuban, and where I experienced Baba in Australia. ओके, इनको जब ये माउंट आबू के पहाड़ी देखे इनको यही लगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे ही यहाँ पर भी पहाड़ियां हैं जहाँ पर मैं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को अनुभव करता रहा. Okay, so so I was feeling very intoxicated at that time. How when I first met Baba in Australia, I mean this was in a very subtle form, because my story when just before I took Gyan in Australia, I was living in the forest, like really in the forest. ये जब बाबा का ज्ञान इनको मिला इससे पहले सचमुच ये जंगल में ही रहते थे. वहीं पर इनको शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का ज्ञान मिला और साक्षात्कार भी हुआ. एकदम लिटरली जंगल में ही इनका वास था. And I spent 1 year in the jungle, and I had just 10 visitors in 1 year. To visit you? Yeah. So they were just your 10 friends? visitors. They were 10, your 10 people visit. Okay, No, they were no, your this was friends? people, Just okay. No, people came across this place. ओके, ये जब जंगल में 1 साल रहे केवल 10 लोग उनसे ही मिले हैं 1 साल में और ज्यादा लोग उनसे मिले नहीं. माना इतना एकांत में रहे 1 साल जंगल में. And it was a place in the Kimberley in northwest of Western Australia,
And Okay. I was interested in exploring new places no one had been to. That was my Okay. interest. Okay. The name of the place was Kimberley. Kimberley. किम्बली। Kimberley. हाँ, Yeah. किम्बली एक जगह का नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पर ये जंगल था, वहाँ पर ये रहते थे। इनको नई नई चीजें देखना, समझना, उनको एक्सप्लोर करना, इसमें बहुत इंटरेस्ट था। So I was invited to this place as a 1 week journey, 2 days, 2 days journey by boat, and this boat was coming back after 1 week. So, and it was to help unload food supplies and building supplies to this hermit's camp, or like this sannyasi's camp. ओके ओके, ये केवल वहां पर विजिट करने के लिए गए थे। उस जगह को पहुंचने के लिए बोट पर जाना पड़ता था, जैसे सन्यासी का कैंप जैसे होता है, जहां पर आप एक हफ्ता रह के अनुभव करके वापस आ सकते हैं। तो केवल एक हफ्ते के हिसाब से ही वहां पर गए हुए थे। So when I got there, it was so beautiful, this place with fresh water coming out of the ground and waterfalls into the ocean, and it was like a little paradise. And when the boat went back after 1 week, I stayed. I stayed in that place. ओके, केवल एक हफ्ते के लिए ही गए थे। इनको वो जगह स्वर्ग जैसे लगने लगा, इतना फ्रेश वाटर था जो समुद्र में जाके मिलता था। इन्होंने डिसाइड किया मैं वापस नहीं जाऊंगा एक हफ्ते के बाद बोट में, मैं यहीं और थोड़े दिन रह के देखता हूँ क्या अनुभव होता है। And in those days, for me, I already had this awareness, like wherever I went as a journey, whatever I felt I needed, I would take with me, so I felt I was always at home. ओके, And इनको I was लाइक जी, वहां पर जैसे अनुभव होता था मैं अपने घर पे हूँ, और इनको हमेशा एक रहता था कि मैं कुछ अच्छे अनुभव करूँ, जो मैं चाहता हूँ वो पाऊँ लाइफ में। तो इसीलिए उस जगह पर वो थोड़ा दिन रुकने का डिसीजन लिया और वहां पर रुक गए। And I was very lucky with my Lokik parents. My father was, his only philosophy was like, as long as you're happy what you're doing, that's the most important thing. या दैट्स गुड। इनको अच्छे पेरेंट्स भी मिले जो ये मना नहीं करते थे कि ये नहीं करो वो नहीं करो। उन्होंने इनको एनकरेज किया, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो भले आप करो। And at that time, I was already 2 years into a journey of traveling around Australia as a working holiday. ओके, इनको ऑलरेडी 2 साल से ही वर्किंग हॉलीडे मिलता है, काम करते करते ही आपको छुट्टियां मिल जाती है। तो उस हिसाब से ऑलरेडी पूरा ऑस्ट्रेलिया का टूर तो कर ही रहे थे। So when I got up to this place in the Kimberley, this was a sacred site of the indigenous people of Australia because of the fresh water. And ओके the indigenous people, they see the land as their temple. ओके, तो ये किम्बली करके जिस जगह पर ये रहे 1 साल जंगल में, वो उनके लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान महसूस होने लगा, जहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं उस जगह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखते हैं। And so for me, I had experience with the Aboriginal people. Actually, 1 year before this experience, I was actually had the experience of being called up into the Aboriginal law, their spiritual Like you law. Aboriginal, like can you, what is, Yeah, what do so you, the Aboriginal people are the Adiwasi of Australia. okay, okay, Yeah, so very, very dark skin, very black skin. okay, And they live completely in the forest, in the jungle, and they live off the different herbs and different fruits, and of course they're non-veg. They used to hunt animals, the kangaroos and different things, but they were very, very much in tune with the nature and all the surroundings, because that was their home, and they did not build any houses. They were ओके nomads. ओके। Yeah. तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में एब्रिजिनल करके लोग रहते हैं जो आदिवासी होते हैं। लिटरली उनका अपना घर नहीं होता है, जंगल में ही पैदा होते हैं, जंगल में ही खाते पीते हैं। नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं जो एनिमल्स को भी खाते हैं, प्राणियों को। तो उनका लाइफ वहाँ ही उस जंगल के अंदर ही होता है। बाहर की दुनिया को जानते भी नहीं, देखने में बहुत लाइक डार्क स्किन, काले होते हैं। तो They're इनके very, संबंध very, very black, very like almost in India would be the really South Indian, where the darkest of the dark of South या India. देखने में They would be like बहुत this. काले होते हैं, जो स्किन होता है उनका। तो ऐसे आदिवासी लोग वहां पर रहते हैं जिनको एब्रिजिनल्स कहते हैं। So this experience I had of being called up into their spiritual law was like they send out the tribal elders at a certain time of year. They will send out the spirits, and it's like a subtle body,
like a Okay. ghost type figure, and Uh-huh. they find the young boys that are ready for their initiation into their spiritual law. ओके, तो कुछ So उनके नियम भी होते हैं, वो जो आदिवासी लोग होते हैं, तो उनको भी जैसे सूक्ष्म शरीर है, आत्मा आती है, यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स जो हम यहाँ पर बाबा के ज्ञान में प्रैक्टिस करते हैं, वो चीज वहां पर भी आदिवासी लोग करते थे, उनके कुछ नियम थे, ऐसे ऐसे करना है करके। So I had this experience which was very scary at the time of this bodiless soul coming into me, and I ओके, was feeling like I couldn't move. I was lying down and I was ओके, inside this Aboriginal's house. ओके, And the experience was in the morning. When I had this experience, in the morning outside the house was this, we have this lizard in Australia, this lizard reptile, ओके, which grows up to about 6 feet long. And one of these lizards was on the back doorstep of this house in the morning. ओके, And that's a symbol of the Aboriginal, of the spirit. ओके, So when I shared this experience with this Aboriginal girl, who was my friend's partner, she said, "Oh, you're being called up for initiation into Aboriginal law." ओके, ओके। माना वो जो आदिवासी लोग हैं उनके अपने ही तौर तरीके हैं, आत्मा को बुलाएंगे शरीर के अंदर, तो ये उन उन लोगों के साथ ये जंगल में रहे डेविड भाई। तो वहां पर जैसे यहाँ पर छिपकली होती है ना, ऐसे लंबे लंबे बहुत 6 फुट लंबे एक रेप्टाइल जैसा एक जानवर भी होता था, वो इनके घर के पीछे जैसे दरवाजे पर रहता था, माना एकदम जंगल का जो जीवन है इन्होंने अनुभव किया है उन आदिवासी लोगों के साथ रहकर। And so part of a big part of this initiation, which is very like quite complex, a lot of things, but one of their initiation parts is to go into the jungle and live in the jungle for a long length of time. ओके, And how you experience living in a jungle like that, because there's उस उन many आदिवासी challenges. या उन आदिवासी लोगों के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूल्स रेगुलेशंस थे जो बहुत फॉलो करते थे, वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट भी थे, लेकिन उसमें एक था कि आपको कंपलसरी जंगल में रहना ही है, जंगल का जीवन को अनुभव करना ही है, ये उनका मेन रूल था आदिवासी लोगों का। So this was in, I think, 1981, and in 82 I got this invitation to this place in the Kimberley. ओके, So that was like connected with that journey up, the 2-day boat journey up to this place. Yeah, And okay. because this place was a sacred site of the Aboriginal people, all this information I didn't know at that time, that it was a Okay. sacred site. But anyway, the experiences there were like, you know, when Baba says to us, you know, remember the days of your childhood. या So for me, all this magic happened in this place. ओके, ये सब 1980 51 52 की बात है, जब ये आदिवासी लोगों के कनेक्शन में आए, उस जंगल के जीवन को अनुभव किया, तो उनको जैसे अच्छा लगा उन दिनों उन आदिवासियों के साथ रहकर, जैसे एक स्पिरिचुअल जर्नी की वहां से शुरुआत हुआ, आध्यात्मिकता की, ये भी कह सकते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना अपने बचपन के दिन भुलाना नहीं है, तो उन दिन इनको बहुत याद आते हैं कि कैसे मैंने उन दिनों को बिताया। So the first thing I experienced there was because there was 3 other people there when I was there in the area. So I had contact with other people in the day, but the first thing I experienced was how I was uninfluenced by anything outside. Yeah. Yeah, And that for इनको me was like a big liberation, because you were left to your own sanskaras, your own nature completely. या ओके, तो 1 साल इस पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर के उस जीवन को अनुभव करना इनके लिए एक बहुत ही अलग अनुभव था। कहाँ पूरी दुनिया से तो डिस्कनेक्ट थे, हार्डली कुछ लोगों से मिलते थे, तो अलग ही एक मुक्ति का उनको वहां पर अनुभव हुआ। So for me, of course, this area was very interesting, a very rocky area, and I found a place on the side of the cliff, on the rocks, and I saw how I could build my own kamara from the forest, out of the Okay. trees in the forest, and I built a place there off the cliff face. तो इन्होंने एक अच्छी सी जगह ढूंढी वहां पर, पत्थर के बाजू में ही, उस जंगल में ही, पहाड़ों के ऊपर, और खुद अपने घर वहां पर बनाए, जो जंगल में मिलते हैं ना लकड़ी वगैरह लेकर के, उसी में से घर भी बना ले उन्होंने वहां पर। So
in a short space of time, I built the house because I'm actually carpenter by trade, so that was my trade, carpentry. So I had very good knowledge of building. Okay. Carpentry was your profession? Yeah, Okay. that's my तो trade actually, carpentry. ओके, ये कारपेंटरी का ही काम करते थे लौकिक में ही, इसीलिए इनको जंगल में वो घर बनाना बहुत आसान हो गया लकड़ियों के साथ. So after I built this place off the cliff out of trees from the forest, I lived in that for the next year. And then I had experience of, I started getting inspired to paint. So I painted a picture of this head and this third eye and this light coming out from the third eye. Whose head it was? It was just a picture, a drawing. No one particular, just a drawing, ओके. painting. तो उस जंगल में ही इनको पेंट जो अभी ये सेवाएं कर रहे हैं उसकी प्रेरणा भी उस जंगल में ही मिला, वहीं पर इन्होंने पेंटिंग भी शुरू किया. ऐसे किसी का सिर बनाया, फिर यहाँ से लाइट निकल रहा है, ऐसे ही कुछ इन्होंने पेंट किया वहां पर. And I had the feeling at that time because there was bored silence because no engine, no motor car, no radio, no TV. Of course, those days, no internet, no cell phone. Yeah. So no distraction from anything outside, no. इनको बोर भी हुआ क्योंकि मोटर बाइक नहीं है, कार नहीं है, आवाज नहीं No, है. only access by boat. 2 days to get to this place by boat. No roads. No roads anywhere, ओके. yeah. वहाँ रोड से भी वो जगह कनेक्ट नहीं था, केवल पानी से ही आप जा सकते थे. वो भी 2 दिन सफर करके बोट में आप जाएंगे तो उस जगह पर आप पहुंच सकते. तो आप सोच सकते हैं कि कितना सुनसान वो जगह होगा जहाँ टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, कार नहीं है, बाइक नहीं है. उन दिनों मोबाइल फोन इंटरनेट तो खास था भी नहीं, मतलब दुनिया से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट होकर रहे हैं. So the feeling was also, when I went there, I took food supplies in a boat. I took more than what I needed for that 1 week. So I had supplies for the next, I think, 2 months or so. And the feeling was like, because in that situation, everything is treasured so much. Because whatever you have, food supply, that is all you have. And you have to be very disciplined, how much you have of this, of that. And that was a big lesson for me. ओके. मना ऐसे जब हम अलग रहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का वैल्यू भी कितना होता है, तो खाने पीने की चीज़ें भी जब भी इकट्ठे करते थे जैसे एक आध मास का, तो उसका वैल्यू बहुत होता था कि ये ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि क्या वो खा रहे, कितना खा रहे, कितने दिन के लिए इसको संभाल के रखना है, इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता था. So when I remember that at this time now, when Baba says you only need 2 chapatis, yeah? Sometimes Baba says just 2 chapatis is enough. Well, in that situation for me, it really was, I discovered how much I really needed, the body really needed. And every time I had even one little bit more or one mouthful more than I needed, I would get a very subtle but very clear indication of that was outside what I felt at that time was a natural law of surrender. इनको उस 1 साल में जैसे इतना वैल्यू हो गया भोजन का, जैसे बाबा कहते हैं ना, 2 रोटी मारना, 2 ही रोटी खानी है. तो इनको उस सन्यासी जीवन का एक नेचुरल अभ्यास वहां पर हो गया. अगर इनको लगता है मैंने प्लेट में ज्यादा भोजन लिया या एक गिट्टी भी मैंने ज्यादा खा लिया, तो इनको महसूस होता था कि मेरे लिए एक्स्ट्रा है. माना संपूर्ण समर्पित जीवन का एक फाउंडेशन क्या होता है, वहां पर उस जंगल में इनको अनुभव हुआ. And I felt at that time that truth was within silence. There was a feeling, there was this intelligence, this being in this silent space, and if I surrendered to this silent space, whatever I needed physically would be provided to me. इनको ये महसूस हुआ कि साइलेंस की शक्ति में ही सत्यता है, और जब हम साइलेंस में रहते हैं तो जो हमको चाहिए वो मिल जाता है अपने आप, नेचुरल. And I started actually open eye meditation there. I painted a rock on the side of the cliff, and I had this experience of myself as light in the center of the forehead, and this experience of myself being immortal, this sort of thing of eternity. And I was so intoxicated with this, I went up
the next day to this rock on the side of the cliff, and I painted this rock with a red dot and this blue circle around the red dot. And I used to sit in the evening time and focus on this rock and having the thoughts of myself as light. इनको वहां पर रहते ही जैसे आत्मा का साक्षात्कार हो गया कि मैं एक लाइट हूँ, और उस रिलेटेड चित्र भी वहां पर जहाँ पे भी जगह इनको मिला, पत्थर मिला, कुछ मिला, तो वहां पर ही अपने आप उस इन चीजों का चित्र भी बनाने लगे. पेंटिंग का काम भी जैसे इन्होंने वहीं से शुरू कर दिया. And it was not long before that I also painted this picture of this golden temple with these 5 archways, 5 doorways. A little bit like if you look at the picture of the Taj Mahal, if you look at it on the front view, you can see these 5 arches on the front of the Taj Mahal. Okay. And outside of these arches, I put these colored rainbow colors to this eye, like an eye in space, like a night sky background. Okay. And I was very inspired at that time because the 5 rainbow colors was the 5 senses. And I remember at the time this sannyasi or hermit that was there, he was saying, if you master these 5 senses, that's the aim of this game. Okay, So he okay. was very clear with me. He said, and I was very inspired by that because I was not disciplined at all Yeah. at that time. ओके. तो ये जैसे कहीं चीजों की गहराई में वहां पर ही जाने लगे. जैसे ताजमहल को जब हम देखते हैं तो वहां पर जैसे 5 आर्क्स का उन्होंने चित्र बनाया हुआ है. ऐसे कुछ चित्र भी है वहां बनाते थे, शायद बाबा इनको टच करते थे. तो वहां जो लोग रहते थे वो यही बोलते थे कि 5 आर्क्स माना 5 जो हमारे विकारी गुण हैं, 5 कर्मेंद्रिय है, इस पर अगर हम जीत पा लेंगे तो सब कुछ जीत सकते हैं. इन सभी बातों का जैसे एक रियलाइजेशन इनको वहां पर जंगल में ही होने लगा. Because at that time, when I was having these experiences of what I needed, especially with food, previous to that, I was like, you could say, overindulged in things I had. You know, because when you're in that completely alone with everything, whatever tasty things I had, I ate them first, and sometimes more than I needed. Yeah. But I was getting really pulled by, okay, if that is completely controlled and you have just what you needed, everything is provided. Yeah. Okay. So Yeah. So you had that this thing to eat and before going to the jungle, right? Well, yeah, before and Yeah. also beginning of in the jungle, that was there Okay. because every time I had more, I would get a very clear sign that was outside this law, you know, like it was Okay, law, okay. aspect of greed. Yeah. Okay. Okay. And I knew that I had to have that under control. या जो लोभ है, जो 5 विकारों में एक विकार है लोभ, तो इनको जैसे वहां पर ही महसूस होता था कि थोड़ा भी मैं ज्यादा खाऊं तो खाने पर भी मेरा लोभ का जो विकारी गुण है वो आ रहा है, इसीलिए उसको कंट्रोल मुझे करना है. तो सारी बातों का अनुभव भी ये वहां पर करने लगे. So that was a big turning point because then I knew there was some being or some intelligence. I didn't know it was Shiv Baba then that was inspiring me. Yeah. But the feeling of this surrender, and then I started playing music at this place. I actually brought a guitar there, and I used to play, and I used to hear this sound going right across the other side of the valley, and then bouncing back to me like a natural echo. Okay. Okay. And there was this silent space between that echo, and I was feeling that is where truth is, within that silence. ओके. इनको महसूस होता था कि कोई तो शक्ति है जो इन सारी चीजों को मुझे प्रेरित कर रहा है, लेकिन वो शिव बाबा है नहीं जानते थे उस समय पर, और वहीं पर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाने लगे. तो इनको महसूस होता था कि ये जो म्यूजिक निकल रहा है वो एकदम उस दूसरे पहाड़ तक जाकर वापस आ रहा है, और उस साइलेंस में सारी शक्ति है, ये उनको अनुभव होता था. So that was like, I think after nearly probably 8 to 10 months there, it was wonderful experience. But then I was having the feeling, and I grew a little garden. I grew some vegetables. I grew pumpkins, some beans, and things like this. Very minimum, but it was very, very, very appreciated. Whatever I had was like treasured because I had very little. No, I had a spoon, one little wooden bowl, a little wok,
a little cast iron saucepan. That was my kitchen. uh, and Yeah, but okay, let me I translate cooked on this. your, yeah. एक्चुअली वहाँ पर तो छोटा मोटा खेती भी करने लगे वहाँ पर, जैसे कुछ कुछ काकड़ी है, कुछ कुकुम्बर है, ऐसे ऐसे कुछ चीजें भी, बीन्स है, वहाँ पर ही इन्होंने उगाया और वही खाते थे। छोटा सा इनका किचन माना, एक थाली था, एक छोटा सा एक बर्तन था, एक स्पून था, बस उतना ही उनका किचन था। And at that time, of course, I wasn't completely non-veg, but because was what I was brought up to in the culture in Australia, it was like in the food consciousness, it was like the thing of protein. They said, oh, you need some protein. So once every month, I used to go down to the ocean and I used to catch some machli. ओके। Yeah, at तो that इनको time. किसी ने बोला कि थोड़ा प्रोटीन की भी जरूरत होती है बॉडी के लिए। पूरा नॉन वेजिटेरियन तो नहीं थे, इसलिए क्या करते थे, समुंदर के किनारे जाते थे और वहां कुछ मछलियों को पकड़कर खाते थे। But it was bored dangerous because down at the ocean, crocodile was there. क्रोकोडाइल, Yeah. मगरमच्छ भी होता है समुंदर में माना, इसीलिए बहुत डर भी लगता था इनको मछली पकड़ने में। So that was always, I really didn't like doing that, but because you had to be very aware of या the crocodile there, and या yeah, तो मगरमच्छ होता है तो नेचुरली डर लगता है मछली पकड़ने के लिए भी, इसीलिए इनको भी बहुत डर लगता था कि मैं कैसे मछली पकड़ूं। it was a feeling I was looking for something, and the crocodile was also looking for something. Yeah. क्रोकोडाइल मस्ट बी लुकिंग फॉर यू। Yeah, looking. Yeah. ये भी जैसे मछली के लिए ढूंढते थे और वो जो मगरमच्छ था वो भी कुछ ना कुछ ढूंढता था खाने के लिए, तो मैंने इनको कहा कि शायद वो आपको ढूंढ रहा था खाने के लिए। So anyway, after that, then I was having the feeling, how wouldn't it be nice to have this same sort of stage amongst people? Because the isolation was, I loved it. I lived really with all the animals. I had big snakes would come in the house. There was rock wallabies. There was scorpions. There was centipedes. So many things of the nature. But I learned how to live with all those things and respect their space. Yeah. And if something crawled on you, you just waited for it to crawl off. You didn't react. So Okay. that was a very natural discipline that happened in that environment. एक्चुअली ये उस जंगल में रहकर बहुत कुछ सीखा इन्होंने। ये बहुत जो जंगली जानवर होते हैं, उस जंगली इनके घर पे जहाँ रहते थे वहाँ बहुत बड़ा सांप भी आ जाता था, बहुत भयंकर प्राणी उनके साथ ही रहते। लेकिन इन्होंने ये सीखा कि अगर हम किसी को हार्म नहीं करते हैं तो वो भी हमको तंग नहीं करते हैं, तो उनकी भी अपनी स्पेस होता है, वो स्पेस पर उनको रहने देंगे तो वो हम पर अटैक नहीं करेंगे। ये भी उन्होंने अनुभव किया, बहुत जंगली जानवरों के साथ रहे ये जब जंगल में थे तो। Because I was feeling that time I come into this jungle in this area which already had all the other animals. They were already living there, and I like was this intruder that come in and built a place. Yeah. So all that area was all their area, and I was like another animal or another being in their space. So, and I had many wonderful experiences of these animals. ओके, एक्चुअली इनको ये अनुभव हुआ कि मैं भी शायद इन जानवरों के बीच में एक जानवर ही बन गया हूँ, क्योंकि वो उनका घर है ना। जानवरों के घर में जाकर के मैं रह रहा हूँ, उनके स्पेस पे मैंने अपने स्पेस बनाया, ये महसूस इनको हुआ वहाँ पर। So that was a wonderful thing of how to live with all the animals and have the respect for their space and their timings of the day. Everything had its own rhythm and own timings. क्योंकि जानवरों के साथ रहना अलग अनुभव है ना, उनके अपना टाइम होता है, उनकी अपनी दिनचर्या भी होती होगी, तो उनके साथ रहकर मैंने बहुत अलग-अलग अनुभव किए। Because I had no clock, no calendar. हाँ, ओके। इनके पास घड़ी नहीं थी, इनके पास कैलेंडर नहीं था। कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा, नो क्लोथ्स आल्सो। No clothes. ओह, कपड़े भी नहीं थे इनके पास। इनके पास कपड़े भी नहीं थे। एकदम जंगली आदिवासी का जीवन इन्होंने जिया है। So I was really like another animal in that environment, but it was it was a wonderful experience, and of course a very garami climate. So no, it wasn't cold climate, so very hot climate. So
you just needed shelter from the sun was the main thing, you know. ओके, बहुत गर्मियों के दिन थे और इनको बस यही कहना चाहते हैं कि मैं जंगल में विदाउट खाना पीना इस दुनिया से पूरा डिस्कनेक्ट होके जंगल में प्राणी के जैसा Chapel, ही nahi chapel, नो chapel स्लीपर्स nahi, ऑल्सो नो no. चप्पल्स ऑल्सो ओके एक जानवर So जैसा जीवन जैसा इनका जीवन था So you had to be very, very, I mean, sometimes I think as a meditation sometimes is like when we're fully aware of each step we take also. Because there in that environment means you had to be fully 100% aware where you put the next step because there were so many different things there, not just the animals or snakes and all this, but there was a lot of big thorns and thistles and different things which Yeah. easy you could step on. So you जैसे had to be बाबा very कहता well. है या हर कदम संभाल के रखना है तो उनको जंगल में ये अनुभव किया कि मुझे हर कदम संभाल के रखना है क्योंकि चप्पल तो नहीं होते थे जानवर तो है ही और कहाँ पर कांटा हो सकता है कहाँ पर गिर सकते हैं कहाँ पर कुछ भी हो सकता है जंगल में तो हर कदम संभाल के रखने का एक कला उनको वहां से मिला So then after that time, I thought, okay, how to be amongst people and have this same stage. So I end up getting into the village where before I left to this place. ओके And then it was like, I think it was a year and a half I spent painting my experience of that time in the forest. ओके And every picture I painted, I put this point of light in the picture because I had the experience of this point of light. तो फिर वहां जंगल से ये उस गांव में आए जहां से वो गए हुए थे उस जंगल में वहां से आने के बाद 1-1.5 साल तक इन्होंने वहां जो देखा वहां जो अनुभव किया उसका पेंटिंग ही करते रहे और हर पेंटिंग में इन्होंने पॉइंट ऑफ लाइट उस पॉइंट ऑफ लाइट जो ज्योति बिंदु है उसको उन्होंने यूज किया हुआ है अपने हर पेंटिंग में ज्ञान में नहीं थे तभी And I got very inspired to use the spray paint. I liked the idea with the spray painting, so I used to pump up a cylinder by hand, the air pressure, and spray these small little pictures with a airbrush, because you could get this beautiful point of light with a very subtle glory coming ओके out from it. So the airbrush was very suited for that. ओके जो स्प्रे पेंटिंग होता है वो ये बहुत यूज करते थे जो स्प्रे करके पेंटिंग कर सके कि खुद वो सिलेंडर में गैस वगैरह भरते थे खुद उसको मेहनत करके स्प्रे पेंटिंग में हर चीज को अच्छे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके लिए ये स्प्रे पेंटिंग बहुत ज्यादा यूज करते थे So then I painted this big picture of this edge of this planet and this big star right across the picture in a space background. Okay. And right at this time in this village was a festival for the pearl, you know, the moti, the जी pearl. And one BK used to visit this town every year for this festival. He used to travel 2 days by car, 1,500 miles to this village. And he used to stay there for 2 or 3 months. So he come on the property where I was staying and saw this big point of light. ओके तो एक बाबा का बच्चा उस गांव में गए जहां पर रहते थे वहां पर जो मोतियों का ना एक फेस्टिवल जैसे एक त्योहार जैसे हुआ करता था उस गांव में तो उस गांव में एक बाबा का बच्चा पहुंचा 2 दिन ट्रैवलिंग करके 1500 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके माइल्स ओके Yeah. 1500 माइल्स 2 दिन ट्रैवलिंग में लगा और Sorry. इस उस जगह पर पहुंचा वो बाबा का बच्चा जहां इन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स करके रखे हुए थे और उन्होंने उस पेंटिंग में देखा कि कितने सारे इन्होंने शिव बाबा को डाला हुआ है पॉइंट ऑफ लाइट को डाला हुआ है हाँ So naturally, as soon as he saw this picture, this point of light, he said to me, he said, "Do you know what you're painting?" ओके जैसे वो बाबा का बच्चा ने इनकी पेंटिंग्स को देखा और शिव बाबा के हर पिक्चर में शिव बाबा था ही तो उस भाई ने इनको पूछा कि आपने ये जो पॉइंट ऑफ लाइट डाला है इनको आप जानते हो So I said I had the experience of this point of light, and he said, "Yes, this is the image of Atma and Paramatma, Parampita." ओके ओके तो वो भाई ने फिर इनको थोड़ा ज्ञान समझाने लगा कि ये पॉइंट ऑफ लाइट है ये आत्मा है परमात्मा है थोड़ा ज्ञान का इंट्रोडक्शन इनको वहां मिला So he used to come past where the property where I was staying on, because also that property I was staying on was right alongside the beach, Okay. but there was only 7 properties, ओके and that was 15 kilometers outside that village. 15 So very few kilometers, okay. people. Okay. And
he used to come past every 3 days and give me the next lesson in a correspondence course. करस्पॉन्डेंस कोर्स। तो ये जो बाबा का बच्चा वहां पर पहुंचा था, बीच बीच में इनसे मिलता रहा और थोड़ा बहुत ज्ञान भी इनको सुनाता रहा हर 2-3 दिन में, क्योंकि ये गांव से दूर रहते थे, वो भी समुद्र किनारे पर ही रहते थे, कुछ ही घर वहां पर थे। तो वो जो व्हाट वाज हिज नेम? His name was Joe, and he was जो from Western Australia, Joe ओके, Garban. Yeah. जो गार्बन ऐसे वो उस भाई का नाम था जो बाबा का बच्चा है। फिर इनके पास जाता रहा और बाबा का थोड़ा थोड़ा Now he's ज्ञान taken सुनाता। rebirth. ओके, उन्होंने अभी शरीर छोड़कर रीबर्थ ले लिया है, पुनर्जन्म लिया है। ओके। But he was very enthusiastic. Actually, he wasn't a pucker BK. He said to me, I'm not a pucker BK. ओके, तो वो एक्चुअली पक्का बाबा का बच्चा नहीं था, उसको भी उमंग उत्साह बहुत था कि मैं सेवा करूं, ज्ञान सुनाऊं। उन्होंने उस भाई ने इनको सामने से कहा कि मैं पक्का बीके नहीं हूं, डायरेक्टली उन्होंने कहा। But he was very enthusiastic, and as he started sharing through this correspondence. In those days, we had there was 8 A4 size booklets, which were made in London, and they had cassette tape matching. So Okay. 8 cassette tapes and 8 lessons of Raj Yoga. So like I said, every 3 days he'd come past with the next lesson and the Okay. cassette tape, and I'd listen to that, and all the things I heard at that time, many of those things I had experience in the forest. That ओके, तो ये 1.5 जो years जो before. भाई था ये इनके पास बीच बीच में हर 2-3 दिन जाता था और उनको बाबा का ज्ञान सुनाता था। उनके पास 8 कैसेट्स थे और 8 बुक्स थे जो लंदन से वो लेकर आया था। तो जो भी ज्ञान सुनाता रहा, डेविड भाई को ये अनुभव हुआ, तो ये तो सारा मैंने ऑलरेडी जंगल में अनुभव कर लिया है। So straight away I stopped everything. So I started Amrit Vela, then diet change, relationship finished, everything. ओके, इनमें बहुत ही जल्दी वो परिवर्तन आ गया, अमृत वेला करना शुरू किया, खान पान की धारणा भी शुरू कर दिया और जो रिलेशनशिप्स वगैरह जो बाबा प्यूरिटी की बात करते हैं वो भी फॉलो करना शुरू कर दिया। And I remember that time my favorite painting was from midnight, especially in the summer season, in a very hot season, was midnight to sunrise. ओके, And so for Amrit Vela, I said, no problem. I just stopped for 45 minutes. So I used to put a candle and Okay. one chrome thumbtack on the woodwork of the camera I built, on the chrome drawing pin. It's a pin, chrome, yeah, one pin, and with the candle behind a book, it would reflect like this point of light. Very nice okay, star. okay, oh, so you that created was a light my there. that was my translate. ओके Yeah. ओके, तो ये रात को 12 बजे पेंटिंग इनकी शुरू होती थी, सवेरे 6 बजे तक पेंटिंग करते थे। जब इन्होंने अमृत वेला की बात सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 4 to 4:45 तक पेंटिंग बंद करके मैं अपने अमृत वेला करूंगा। तो उन्होंने एक छोटा सा स्टील का पिन लिया और उसमें जैसे कुछ लाइट गिरे ऐसे इन्होंने अपनी व्यवस्था कर लिया ताकि वो सुबह वक्त जैसे दिखता था, ये उसको देखकर ये योग लगाते थे। So it was like I just was really concentrated on this point of light, thinking I'm just this point of light, Shiv Baba's this point of light, no difference in size, but of course Shiv Baba being father of all souls. Yeah, So I okay. remember having very, very lot of really concentrated yoga, Yeah. and many things started changing very quickly. ओके, तो ये उस जो लाइट इन्होंने खुद बनाया जो शुभ बाबा जैसे दिखता था, खुद को भी आत्मा समझकर उस लाइट पर बहुत अच्छे से फोकस करते थे और इनका बहुत अच्छा योग भी लगता था उन दिन। And sometimes Baba says, like with the sannyasis and the sadhus and that, they have their own knowledge, so they don't listen so much to Baba's knowledge. Yeah. So for me at that time when I had this experience, I felt that different sanskaras were changing and I wasn't affected by them. So I thought, okay, this is good. This meditation is good. ओके, तो जैसे सन्यासी लोग यूजुअली ऐसे होते हैं ना कि वो अपना ही ज्ञान को फॉलो करते, दूसरा कोई सुनाते हैं तो सुनते नहीं है, लेकिन इनको ये अनुभव हुआ कि ये ज्ञान तो सच है, इसमें मुझे सचमुच अनुभव हो रहा है, तो ये फिर फॉलो करना इनको इजी हुआ। So I think after about I think it was 9 months after that I came to Madhuban,
It was my first trip to Madhuban, 9 months after taking the course. ओके, तो इनको जो वहाँ पर जो जो भाई ने कोर्स कराया, इन्होंने कोर्स लिया, उसके 9 महीने के बाद ये मधुबन आए। Then after first time, when I first came to Madhuban also, we used to meet Bapdada, Aviyak Bapdada in Om Shanti Bhavan. ओके, And I remember one of the first Murlis, Baba was speaking about pictures, as Baba does a lot of time. Sometimes he says, we need the pictures and there should be beautiful pictures. And then sometimes he says, like this last week, a couple of times, you don't need any pictures at all. Yeah. So at that time when he mentioned pictures, but he said something which I was really inspired, because he said there should be someone who can create some pictures, and the picture should give the experience of Shiv Baba and the home. okay, So I was okay, really feeling he was talking directly to me that time, and I thought I wanted to do that. ओके, ओके। तो ये जब अव्यक्त बाप दादा से ओम शांति भवन में मिले, तो उस समय अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि बहुत अच्छे अच्छे चित्र होने चाहिए जिसके द्वारा सच में आत्माओं को शिव बाबा का अनुभव हो। तो जैसे अव्यक्त बाप दादा ऐसे बोलते थे, तो डेविड भाई को लगता था कि बाबा मुझे ही डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे चित्र होने चाहिए। So then my part started of painting these points of light, and I think I had 5 years traveling different countries around the world. After that, from 1991 to 94, 95, I traveled with another brother from Australia. We did this laser show museum, which is still one now running in Mount Abu in the Naki Lake Museum. The center there, there's one laser show. So we did these types of shows we did in Africa, in USA, in Holland, Spain, Germany, of course Mount Abu. So this was a lovely experience. तो इनका जैसे शिव बाबा का चित्र बनाने का है, इनका रोल खुल गया, अब एक बाप दादा ने खोल दिया। तो 1991 से लेकर लगभग 95 तक 4-5 साल ये और दूसरा एक ऑस्ट्रेलिया का भाई पूरे वर्ल्ड का टूर किया, शिव बाबा के चित्र बनाते रहे। और जो लेजर शो है शिव बाबा वाला, जो अपना म्यूजियम में है, नक्की लेक के पास जो म्यूजियम है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट इन्होंने अफ्रीका में, अमेरिका में और भी कई देशों में पूरे वर्ल्ड में बनाया। And so then, right at that time, after Naki Lake Museum, actually Gyan Sarovar was just starting. I think it was. We did Naki Lake in '93. I think Gyan Sarovar started '95, and then I came to Gyan Sarovar, and I was given accommodation in Kunj Bhavan. That accommodation was done, but then brother Golo was staying. Of course, he built Solar House, which was the first place in Gyan Sarovar. Okay. And he didn't want to stay alone, and he saw me as another foreigner here, and he said, if you like, you come and stay here. Okay, तो 93 में जो नक्की लेक के पास अपना म्यूजियम है, वहाँ का काम कंप्लीट हुआ और लगभग 95 से ज्ञान सरोवर का काम शुरू किया। तो ये ज्ञान सरोवर में बाबा के चित्र बनाने के लिए गए और कुंज भवन में रहने लगे। तब तक जो जर्मनी के गोलो भाई है वो भी वहाँ रहने लगे थे। उन्होंने अपना ही एक छोटा सा मकान जैसे बनाया हुआ था, वो अकेले नहीं रहना चाहते थे, तो इनको भी उन्होंने बुलाया कि आप यहाँ आ जाओ। जो सोलर प्रोजेक्ट्स करते हैं गोलो भाई। So that made it very easy to stay here, because Solar House is a complete house. Okay. And self-contained, and it meant that in the early days I used to spend 6 months here and then 6 months in foreign. ओके, तो ये जो उन्होंने सोलार सिस्टम का घर बनाया गोलो भाई ने, और ये डेविड भाई और गोलो भाई साथ रहने लगे ज्ञान सरोवर में, तो इनको इजी हो गया क्योंकि सोलार से बना वो छोटा सा घर जो उसमें सारी फैसिलिटीज थे। तो 6 महीना ज्ञान सरोवर में रहते थे, 6 महीना ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। And of course also part of my background as a teenager before this, my Lokik father was a chef, cooking chef. Yeah, so I learned cooking at a young age. So when I come here, Solar House has kitchen, so I can prepare food also and different things. So it made it easy to stay. इनके पिताजी जो थे वो शेफ थे जो खाना बनाते हैं, इसलिए बचपन से ही इनको भी खाना बनाने का शौक था, खाना बनाना सीख लिया था। और जो सोलार का घर में रहते थे ज्ञान सरोवर में, तो वहाँ भी किचन था सोलार से जो चलता था, इसलिए इनको अपना खुद का खाना बनाना, खाना रहना इजी हो गया ज्ञान सरोवर में।
So then slowly each year I'd end up spending then 6, 7 months here, 8 months here, then 10 months a year here. Like every year would be more and more time I would be spending here in या Gyan Sarovar. ओके And धीरे those धीरे early, या yeah, धीरे धीरे ज्ञान सरोवर में ज्यादा टाइम रहने लगे, कभी 8 महीना कभी 10 महीना, ऐसे इनका जो रहना है वो बढ़ता ही गया. because I was always feeling, um, even before coming here, I was always kept myself free from any bondage of anything. I didn't want any attachment or any bondage to anything or anyone, or if I wanted to go A to B, I was always free to do that without any strings attached. So I think that experience enabled me to be here and be as a foreigner here longer and longer in Madhuban. क्योंकि इनमें वो जो जंगल में रहे वहाँ पर जैसे एक नेचुरल संस्कार बन गया कि सबसे कैसे डिटैच रहना है, किसी के साथ कोई अटैचमेंट ना हो, ये सारे संस्कार इनमें ऑलरेडी थे, इसलिए तो इनको ज्ञान सरोवर में रहना इजी हुआ. नहीं तो इतना इजी नहीं है एक फॉरेनर को ज्ञान सरोवर में रहना, सेवाएं करना. So, and of course, being busy in Baba's Seva, I was very inspired. Of course, many, I never ever counted how many pictures of Point of Light I painted, but they went to many centers all over the world. Yeah. And then I started painting Brahma Baba's picture. I think in 95, that was the first time I painted Brahma Baba's picture. And then and actually I had 2 experiences of that. I had many, many orders for painting Baba's picture. When I was at the peak of that, I think I had a list of 40 or more big paintings to paint. ओके, So, 95. yeah. या ओके, तो इनका रोल ही ये था, इनकी सेवा ही ये थी, शिव बाबा के चित्र बनाते रहो. तो इनको याद भी नहीं कि कितने इन्होंने शिव बाबा के चित्र बनाए होंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी बाबा के सेंटर्स पर है. और 1995 में इन्होंने ब्रह्मा बाबा का भी चित्र बनाना शुरू किया. लगभग 40 इनको ऑर्डर्स मिले उन दिनों कि ब्रह्मा बाबा का चित्र हमको चाहिए. So then, of course, Diamond Hall got painted. Of course, Gyan Sarovar, the Harmony Hall and Conference Hall in Shantivan, Baba's room and that. But the feeling at the time when I was really fully into the painting was wonderful. The experience of being able to use this talent, which I felt was really a gift from Baba. Yeah. But also then it got to a point where you can only do so many. And then there was a big demand for those pictures, and then I was having the feeling it was a bit bondage also, because some of the centers I couldn't do, and then they say, no, you promised 1 year to be ready and it's not ready, we're opening our center. Okay. Where is our picture? So या तो जैसे जैसे इनकी, जैसे ज्ञान सरोवर में हार्मनी हॉल है, डायमंड हॉल का जो बाबा का चित्र है, कॉन्फ्रेंस हॉल में जो मम्मा बाबा का चित्र है, सभी इन्होंने ही तो बनाया है. तो जैसे 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 बनाते गए, ऐसे ऐसे सेंटर्स से भी बहुत डिमांड आने लगी. इनको थोड़ा सा बंधन लगने लगा, क्योंकि बहनें बोलती थी आपने बोला था 1 साल के बाद दूंगा, आपने अभी तक दिया नहीं, हमारे सेंटर का उद्घाटन होने वाला है, कहाँ है हमारे चित्र, ऐसे पूछते थे इनको. So even that lesson of the balance was a big lesson to learn, of how to say yes, also how to say no. Okay. And then also, but one time actually a meeting with Baba, one of the personal meetings, Baba also spoke about music and about singing songs and all this. So this was a blessing many years ago from Baba, and that was always been in the back of my mind, that I would use more music as the kalpa went on for a seva. ओके, तो इनको जैसे बाबा से ब्लेसिंग मिला चित्र बनाने का, और बाबा गीत के बारे में भी मुरली में बोलते थे, म्यूजिक के बारे में भी मुरली में बोलते थे. तो डेविड भाई खुद का म्यूजिक भी बजाते हैं कितने तो प्रोग्राम्स में. तो सारे जैसे इनको ये अनुभव होता गया कि बाबा से ब्लेसिंग्स मिले. Because the feeling at that time was also how to use sound to create silence. That sort of metaphor, using sound to create silence, take you into a space of silence. So I feel more and more over the years, the more I've been able to use that as like a calm yoga, where I can be really in meditation and play music. Then it really becomes sounds or music which will take souls beyond. So that's been like
a wonderful experience of that too. या तो इन्होंने ये बैलेंस भी सीखा कब हाँ बोलना है कब ना बोलना है। और जैसे एक अलग ये तो अनुभव है ना, साउंड बजाएंगे, आप म्यूजिक बजाएंगे और उसके आधार पर आप आत्माओं को साइलेंस में ले जाएंगे। एक अलग एक कॉम्बिनेशन है ये। तो इसकी भी कला इनमें आए, बहुत सारे प्रोग्राम्स में म्यूजिक बजाते हैं और आत्माओं को बहुत सारे डीप साइलेंस में ले जाते हैं। So also this has been that was a long journey of also because the arts in music and all these things, they can be very attractive, and also there can be a lot of ego involved in that as well. Okay. Yeah, if somebody, like I remember seeing musicians in London, some old BKs now here, some not here, but because their arts are like that, I was always feeling, how can I be 100% in a space of yoga while doing this and not be influenced by any comment, whether that was good or not good, and that was Okay. was one point where I really experienced myself just as an instrument. तो And there was a लेट मी yeah. ट्रांसलेट दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट उन्होंने अभी शेयर किया कि ऐसे सेवाएं जब हम करते हैं, हमारे पास विशेषता होती है। तो ये म्यूजिक बजाते थे, पेंटिंग करते थे, तो दूसरे लोगों में जब ये कलाएं होती है तो नेचुरली ईगो आ जाता है। तो इन्होंने ये प्रैक्टिस किया कि मेरे में ईगो ना आए और मैं केवल बाबा का एक निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ, वो उस भान से मैं सेवा करूँ, इसका भी इन्होंने प्रैक्टिस किया। So then there was experience at one point where I really had that experience of being a nimit instrument. And then it was like the feeling, yes, this is the space I'd always like envisioned, was a space where seva happened, where you just become the instrument of Baba. Yeah. And people get inspired by that. तो इन्होंने अच्छे से ये अनुभव किया कि मैं बाबा का एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा मुझे यूज कर रहा है उसका चित्र बनाने के लिए। उस चित्र को देखकर लोगों को योग लगेगा, सेवा होगी, तो एक निमित्त भाव से ही ये बाबा के चित्र बनाने लगे। So yeah, so and now I feel at this current time now is a feeling of I guess sort of I've been more on the feeling of, okay, understanding drama in the sense of everything that's happening is perfect for this time now. Yeah. And not having any thought of anything that should be another way or could be another way. Yeah. And really being in a space of as an observer and in a space of a lot of silence, not too many thoughts. ओके। तो अभी भी जो कुछ भी हो रहा है जीवन में, जो कुछ भी सिचुएशंस आते हैं, जो भी सीन्स आते हैं, उन सीन्स को ये खुशी से एक्सेप्ट करते हैं और जो हो रहा है समय के हिसाब से परफेक्ट हो रहा है, ये भी इनको अनुभव होता है। अपने संकल्प नहीं चलाते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, और बहुत ज़्यादा साइलेंस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा संकल्प नहीं चलाते हैं। Because at this time now, it's like there's so many things, so many issues in the world, so many problems, and now with all this virus thing and a lot of fear, a lot of things happening, but I feel the more we can be really, really present and 100% in what we're doing, any action, then that's like that's the doorway into Baba's world of silence, of just being really detached. Loving but detached, but in a sense of, and it's a very much can be a very feeling of complete fulfillment within that space too, because there's nowhere else you're thinking you should be or should go, or you can be 100%, and I think that's important for everyone to be, whatever they're doing, they really want to be doing that at that time. Not like I'm doing this to get to somewhere else, but can be 100% in what I'm doing. तो अभी का जो टाइम है, सिचुएशन है, अभी हम जहाँ पर भी है, कहीं और जाना चाहिए था, कहीं और कुछ करना चाहिए था, ये संकल्प अभी हम ना करें। न्यारा प्यारा होकर के समय को, ड्रामा को, बाबा जैसे जो भी चला रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ज़्यादा हमारे संकल्प नहीं चलेंगे। 100% जो भी हम कर रहे हैं, कुछ और हमको चाहिए, कुछ और हमको पाना है, वो भी संकल्प नहीं। जहाँ बाबा जैसे हमको चलाए वैसे हम चले, उसी में हमारी भलाई है।
And I feel even the nature here in Gyan Sarovar, I mean the birds, all the things, it's like almost all the nature can teach us also to be very present, because the nature operates like that. The birds, the animals, they're just in that moment and they do what they have to do, but it's like, and that pulls us, can help pull us back to that space too. तो जैसे ज्ञान सरोवर में रहते हैं, वहाँ भी नेचर है, या वहाँ पे भी बर्ड्स है, नेचर है, नेचुरल ब्यूटी है, तो हमको क्या सिखाता है? जो आप कर रहे हो उस प्रेजेंट मोमेंट में वही करो, इधर उधर की बातों को सोचो नहीं, अपने स्पेस में रहो, अपनी जगह में रहो, न्यारे प्यारे रहो। तो वो भी इनको ज्ञान सरोवर में रहते रहते, नेचर को देखते देखते सीखने को मिलता है। Because sometimes I feel in that doorway, using the drama, or using the nothing new aspect of drama, it means that then sometimes, I mean, I think a lot of times we can get caught in whatever situations are happening around us and what people are doing, what people are saying. But then to really understand that, okay, if I really understand the drama, it means I have no question about anything, because it's only repeating. So it means it leads me to be in that space of, really in that space of silence, internal silence. जब हमको मालूम है जो हो रहा है वो रिपीटेशन ही हो रहा है, जो कल पहले हुआ था वही तो हो रहा है, इसीलिए क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन कुछ कह रहा है, कौन कुछ कर रहा है, उसके प्रति हमारा संकल्प नहीं चलता है। जब हमको मालूम है जो कुछ भी हो रहा है वो एग्जैक्टली एक्यूरेटली रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए अपने संकल्प नहीं चलाते हैं, अपने साइलेंस के स्पेस में रहते हैं। And that leaves, I feel that leaves us in a space where each one then will know exactly what they have to do within that part, because we know our own part, and that's all we know. We don't know someone else's part. So it means then the more silence I have, the more I am able to catch what I need to do the next step, what in my part. So it becomes very clear then what the soul has to do. जब हम साइलेंस में रहते हैं, खुद के पार्ट को भी हम समझ जाते हैं, और ये भी हम समझ सकते हैं कि दूसरों का भी अपना अपना पार्ट है। तो दूसरों के पार्ट तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन खुद के पार्ट तो अच्छे से हम समझे और उसको बजाएं, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम बहुत साइलेंस में जाते हैं। Because each one has different specialties, and of course to be able to use those, of course, for Baba's seva and that's and I always felt, because I've had that freedom in, I guess, in the art side of things, of being creative, it means more and more I feel when we're doing, and also when we're doing what we really like to do as well. That's very important, because if I'm doing something because someone else wants this and this, and maybe I feel I don't want to be doing that, or this is boring, or you're doing that to get to something else, I feel we need to get back to something which we really have a lot of passion to do for Baba, and really find that part which we really enjoy doing, which is important. तो हर एक में अपनी विशेषताएं हैं जो बाबा सेवा में यूज करता है, ये भी हमने देखा, अनुभव किया, और ये भी जैसे इनको एक भाग्य था कि ये थोड़ा इंडिपेंडेंट होके भी अपनी सेवाएं करते रहे, फ्रीडम रहा इनको, और ये भी बहुत ज़रूरी है। बाबा के लिए हम खुशी से सेवा करें, अपनी विशेषताओं को यूज करें, ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ कहा करने के लिए हम बोर होके कर रहे हैं, ऐसे नहीं, हर एक सेवा को हम एंजॉय करें, खुद में जो विशेषताएं हैं वो भी हम सेवा में यूज करें, ये बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम सेवा को एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो बोर हो जाएंगे। So that's been a nice journey of rediscovering that. Sometimes I think it's like a child too, when we see a child playing and just play, they might play with this, they might play with something else, and they move from this, they move to that, and when something becomes, you find something else which you use that creative energy with, So sometimes children are a good example for this, because they don't have any knowledge of anything. They just find something that they're interested in, and they pursue that till they're not interested in it, then they move to something else. So
Why you said this? I said more in the sense of, you know, finding something creative to do for in Baba's world. या ओके। तो जैसे छोटे बच्चों का होता है ना, वो नई नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं, ये किया वो किया, दूसरा कुछ मिला उसको देखा, इसको देखा, उससे खेला, इससे खेला। तो बाबा के लिए भी नई नई चीजों को हम करें, क्रिएटिव बन करके, जैसे बाबा का चित्र में बनाऊं, ऐसे ऐसे इनको फिर वो अनुभव भी होने लगा कि मैं नई नई चीजें करूं बाबा के लिए। सो दैट पिक्चर बिहाइंड यू, दैट वाज आल्सो पेंटेड बाय यू? Yes, Behind this you? is a dot painting just with the little dots. So when was that? This must be at least 10 years ago, 12 तो years ago. ओके, इनके जो पीछे अभी चित्र है ना, ये भी इन्होंने ही बनाया हुआ है, डॉट 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 वाला शुभाबा लगभग 10 साल पहले का बना हुआ है। This one lives here in Solar House. तो ये सोलर हाउस में है ज्ञान सरोवर में, तो वहाँ पर बैठ के आपसे मिल रहे हैं। So thank you. I don't know. Is the time? What is it? It's 8:30. या इट्स 8:30 now। So thank you for this बहुत opportunity to धन्यवाद share है some हमको stories. चांस दिया शेयर करने के लिए। ओके And डॉक्टर साहब धन्यवाद अदा करें डेविड भाई का। आज तो पहचान नहीं सकते डेविड भाई आपको। She can't recognize you now. She couldn't recognize you. okay, because of the beard. हाँ, Yes. और कैप भी है ना। The topi. Yeah, still no hair. So maybe recognize now. Yes. इसीलिए Yeah, बहुत अच्छा। she is very वाह yeah. वाह, डेविड भाई को कितना एंग्रोस है अपने काम में। ही इज हाईली Yeah. एंग्रोस इन हिज ओन ड्यूटी, Yeah. so he has no problem because he is always inside, Because you're always introverted. And for the Baba's picture and Baba खुद, Yes, तो it's been blessing. Baba's हाँ, blessing. Yeah. हाँ, इसीलिए हमें भी we would like to be like you only, engrossed always in the Godfather and God's picture, and Yeah. we can't draw it, but we can draw inside the In our mind. inside the mind, Yes. and Yes. आपकी तरह एक्यूरेट बना सकते हैं, क्योंकि वहां तो एकदम एक्यूरेसी होती है। Wonderful. Yes, we have to draw it inside here, no? अंदर बनाना है चित्र, Yeah. यही बोल रहे हैं। Because when Baba sometimes says we need picture, then he says we don't need picture. So also actually when I used to paint Baba's picture, when I would look at the painting, I'd have to look somewhere else, some point of light, some reflection, because if I looked at the picture, then I would start thinking, oh, maybe there could be some more rays here, some aura, some different shade. So I would have too much yoga on the picture itself, Yeah. not Baba. Okay. So that was my test paper, how to be detached from the picture too. ओके, तो इन बाबा Yeah. कभी कहता है चित्र चाहिए, बाबा कभी कहता है चित्र नहीं चाहिए। तो चित्र बनाने से पहले इनको लाइट को देखना जरूरी होता है ताकि अच्छे से चित्र बना सके, क्योंकि चित्र के साथ भी इनको डिटैच रहना पड़ता है, ताकि बाबा को याद करके चित्र बनाना है ना। अगर चित्र के साथ अटैच हो जाएंगे तो चित्र नहीं बना सकते हैं। तो चित्र माना वो भी सेवा है, सेवा से भी डिटैच होकर के इनको सेवा करनी पड़ती है। नाइस, Because, वेरी नाइस। Yeah, because sometimes when we create something, we have attachment to that, no? Yeah, So very true. you look at that and you look. I used to look and I used to have to look at some point somewhere else. So या क्योंकि जो भी हम सेवा करते हैं उसके साथ हमारा सूक्ष्म अटैचमेंट हो जाता है। हमने किया, हमने बनाया, तो ये पिक्चर बनाते थे कहीं और भी देखते थे, ताकि अटैचमेंट ना हो, ये मैं बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया करके। yeah. So You that's are also, very busy. We want to invite you in Baroda. Oh wow! So you have to send your Vimana. विमान भेजना पड़ेगा, हाँ, विमान भेजना पड़ेगा अभी आपको। भेजेंगे कोई विमान, अच्छा, Flying जरूर one. जरूर। Flying one. डेफिनेटली they'll send one. पर कभी आपका वो क्या बोलते हैं जो आप सॉन्ग से ले जाते हो ना, You क्या
You take all your instruments वो of भी music, सुनाओ, na? इंस्ट्रूमेंट भी सुनाओ। मिनस भाई I have बराबर ने? She अभी knows. सुना She knows Dinesh all. bhai? Yeah. I have many instruments. I'm इनके पास trustee of बहुत many. ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इससे वो म्यूजिक बजाते हैं. तो अभी म्यूजिक कभी सुना? डेमोन्स्ट्रेशन वी वांट सम डेमोन्स्ट्रेशन A demonstration. म्यूजिक. हाँ I can play a little bit of flute if you like to finish. थोड़ा सा ये फ्लूट मुरली बजाना चाहते हैं अगर आप लोग. हाँ Yeah? वो बजाएंगे, वो हम बाबा को याद करके फिर पूरा हाँ, करेंगे. पूरा करेंगे। ओके, दैट्स फाइन. या Yeah? और All right. आवाज की मूवमेंट से आप विमान में यहाँ आ जाना. हाँ, नाउ यू हैव टू रीच देयर थ्रू दिस म्यूजिक, रीच बरोडा. Ah, okay. Yeah, in the flight of Okay. music. Yeah. They're inviting you. I'll just grab the flute. Okay, yeah, sure. वो अभी फ्लूट लेकर आएंगे और बजाएंगे. Okay, so I have some flutes here which these are Native American spirit pipe. So they're just five notes in a, they call a pentatonic sound. तो ये भी हमारे लिए मुरली बजाएंगे. हम सब बाबा को याद करके संपन्न करेंगे क्लास को. So I'm just going to put on something else just to match that. ये कुछ आपके लिए सेटिंग कर रहे हैं ताकि अच्छे से म्यूजिक आ सके. You can hear that? सुन सकते हैं ना? सुनाई दे रहा है? या And there's another key. Just Thank you, Om Shanti. Thank you so much. I just saw a bit of a flute there. I saw a glimpse of a flute, was it? मिनेश भाई आपको बोल रहे हैं, उन्होंने कहीं फ्लूट देखा करके. I also have very nicely tuned flute. Okay. Oh, wonderful. Special artist, yes. Actually, before couple of days, I have sent one flute to Canada. My Lokik son is playing flutes. Lovely. He is also flutist. That's why I show you this flute. Okay. Okay. Nice. Many years ago, I used to play flutes, but since long I am not playing flutes.
So Why aren't you still playing? क्यों नहीं बजा रहे पूछ रहे हैं. there is no answer. No answer. No reason, no answer. Okay. But many years ago, I used to play flute. Okay. So when you play flutes, I remember that days when I got one flute Yes. Okay, to show lovely. you. Okay, so Baba is wonderful. Baba's child David Bhai is wonderful. Your part is really wonderful, and the cap on your head is also wonderful. There was a spiritual guru in India. You must know him, Osho Rajneesh. So today Yes. your appearance is like him. Okay. Oh, wow. Okay. Yes. He was very fond of variety caps and costly wristwatch. Like so, today your appearance is like Rajneesh or Osho. Okay. Okay, one more thing, Okay. Brother Yeah. David. Do you remember Brother Ram Bachchan? He was Madhuban Yes, I Niwas. do. I do. He Yes. was also an artist. Yes. So actually, I had Yes. a shop in front of gate number 2, Shantivan gate number 2, and he used to supply me some designs, Shibaba designs like. Okay. Yes. Okay. So he was Yes, I also an remember it well. artist and Yes. something. Okay. In Yes. 2005, he left Madhuban. He was from Assam, right? Yes, that's right. Yes, and I heard actually just last or early this year he'd left the body. Oh, Oh, Early उन्होंने this शरीर year. छोड़ दिया. Yeah. oh, Yeah. okay. Yeah. So I had a connection with him, and he used to supply. Yes. Many years he was in art department in Gyan Sarovar too, in the Oh, beginning. Yeah. oh, yeah. Yes. That's why while meeting you, I remembered him also. Okay. Okay. Thank you Okay, thank you so Okay, much. thank you very much. for sharing your Om Om experience. Shanti. Shanti, everyone. Sometime. Good night, Om Good night. Shanti. Good night. Thank you, Savi. Okay, bye, Om Shanti. Bye.